तो बस लास्ट में आ जाते हैं एंजाइम्स के बारे में. वी वर डूइंग अबाउट एंजाइम्स एंड वी हैड डन द इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स. ठीक है. हर जगह बेटा देखो, नेचर में भी बैड एलिमेंट्स एंड गुड एलिमेंट्स हर कुछ चलता है. इसी तरह बॉडी में भी हमारे प्रोमोटर्स भी है और इनहिबिटर्स भी है. इनहिबिटर्स के बगैर काम नहीं चलता. एक सेल में एक रिएक्शन हो चुका, उसको रोकना है ना. नहीं तो एंजाइम करता जाएगा तो वो दैट कैन बी हार्मफुल ऑल्सो. ठीक है. सो एंजाइम की एक्टिविटी रोकनी है तो इनहिबिटर की जरूरत है. ठीक है. तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा zymogens और proenzymes, right? So there are some enzymes which are secreted in their inactive form. Active form में नहीं होते. ठीक है. जब जरूरत है only then they get activated. So that inactive enzymes are called as proenzymes or zymogens. So note down zymogens or proenzymes. Zymogens or proenzymes. These are the inactive form of the enzymes. These are the inactive form of some of the enzymes. These are full stop करके these are secreted as proenzymes. These are secreted as proenzymes and gets activated as enzymes when required. When required. For example, एग्जाम्पल आ जाता है प्रोरेनिन. Another is pepsinogen. Another is trypsinogen. Another is chymotrypsinogen. And another is procarboxy peptidase. These are some of the proenzymes. ठीक है जी. जो प्रोरेनिन है ये है zymogen और इनकी एक्टिव फॉर्म क्या है? प्रोरेनिन gets changed into renin with the help of HCl. इसी तरह से ये भी gets changed into pepsin. trypsinogen एक्टिवेटर क्या है? एंटीरोकाइनेज. किसमें एक्टिव हुआ? ट्रिप्सिन में. काइमोट्रिप्सिनोजन, यहाँ पे एक्टिवेटर कौन आ गया? ट्रिप्सिन. इसमें चेंज हुआ. एंजाइम इज काइमोट्रिप्सिन और यहाँ पर भी ट्रिप्सिन है एंड एंजाइम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज. ठीक है जी. These are zymogens. आप कॉलम बना सकते हो. These are catalysts and these are the active enzymes. These are active enzymes. ठीक है. Now write down question. Why some of the enzymes are secreted as zymogens? Why some of the enzymes are secreted as zymogens? तो आंसर लिख लीजिए. These are strong enzymes.
These are strong enzymes, and they may digest their own cells or wall of the alimentary canal, क्योंकि ये सब digestive enzymes है. Wall of the alimentary canal if they are secreted in active form. If they are secreted in active form. Okay, what I mean to say, if they are secreted as pepsin, renin, trypsin directly, then as and when they are secreted, they immediately starts eating their wall of the alimentary canal. So they are secreted as zymogens. Zymogens attach with the food particle and then gets activated. Okay? They may digest the wall of the alimentary canal. Therefore, they are secreted as zymogens. Therefore, they are secreted as zymogens and gets activated only when they are required. ठीक है जी? Are you done with these enzymes? कर लिए ये zymogens and enzymes? Yes, ma'am. चलिए, very good. Next हम आ जाते हैं autocatalytic enzymes. Autocatalytic enzymes. These are the enzymes which catalyze their own formation. These are the enzymes which catalyze their own formation. कैसे? ये देखिए. ट्रिप्सिनोजन पे किसने एक्ट किया? एंटीरोकाइनेस ने, और क्या बना? ट्रिप्सिन. ठीक है? और ट्रिप्सिन जैसे ही थोड़ा सा बना, उसने एंटीरोकाइनेस को रिप्लेस कर दिया, and it starts converting trypsinogen into trypsin. Likewise, trypsin also replaces the requirement of HCl. ठीक है? तो यहाँ पे लिख लो सेकेंड पॉइंट करके. Once these enzymes are formed in small amount, they replace the other catalysts. And catalyze their own formation. मैम आपने ऊपर लिखा है ये क्या है? ये इसका पार्ट है, ऑटोकैटालिटिक. हाँ, ऑटोकैटालिटिक एंजाइम्स ही है. For example, when small amount of pepsin is formed, comma, it replaces HCl. And catalyzes its own formation. Likewise, when small amount of trypsin is formed, it replaces enterokinase and catalyzes its own formation. ये दो जो है ये मेन ऑटोकैटालिटिक एंजाइम्स.
ठीक है, करो लो। डन स्टूडेंट्स, डन कृषा, कृषा प्रतिभा। यस मैम। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा आइसो एंजाइम्स। नेक्स्ट इज आइसो एंजाइम्स। These are multiple molecular forms. These are, अभी मैं आप लिख लो पहले फिर मैं बताती हूँ। Multiple molecular forms of the same enzyme. Which acts on the same substrate. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम एक बार रिपीट कर दो। These are multiple molecular forms. These are multiple molecular forms of the same enzyme which are present in different cells या different parts of the organism that acts on the same substrate to form same product. मतलब मोलिकुलर फॉर्म्स डिफरेंट है, एंजाइम सेम है क्योंकि वो सेम सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहा है और सेम प्रोडक्ट बना रहा है, बट जो एंजाइम का मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है बट उसका स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है. डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्म्स मतलब स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, मोलिकुलर वेट मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, और सबस्ट्रेट भी सेम है. फॉर एग्जांपल lactate dehydrogenase. Lactate dehydrogenase has 5 isoenzymes. Alpha amylase has 16 isoenzymes. Alcohol dehydrogenase has 3 isoenzymes. Alcohol dehydrogenase has 3 isoenzymes. मैम ये होते क्यों आइसोएंजाइम्स? मतलब बस देखो पता क्या बात है, एवोल्यूशन है ना, थोड़ा थोड़ा एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ऑफ द सेल. मैंने कहा है सेम ऑर्गेनिज्म में है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में है, ठीक है. तो बेस्ड ऑन डिफरेंट एनवायरनमेंट ऑफ द सेल दे गेट स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड. ठीक है बेटा, एक मिनट जरा. ठीक है जी. So they become isoenzymes, different molecular forms according to the environment of the cell. ठीक है, otherwise they मैम इनके नाम तो सेम ही रहते हैं ना? हाँ, lactate dehydrogenase 1 muscular form, liver form, इस तरह करके नाम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाते हैं. ठीक है, आगे मेरा मतलब सिर्फ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज सेम रहेगा. आगे जब हम
आगे पढ़ेंगे ना नॉर्मल क्लियर, हम तो नहीं पढ़ेंगे बट सीनियर क्लासेस में होता है बेटा। फिर सिर्फ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज नहीं, इसके आगे स्पेसिफिसिटी भी होती है, ठीक है, तो वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। नेक्स्ट इज मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। हाउ डू द एंजाइम्स एक्ट? These are explained by two models, lock and key hypothesis, induced fit hypothesis. लॉक एंड की हाइपोथेसिस पहले समझो कि ये हाइपोथेसिस कहती है कि एंजाइम का स्ट्रक्चर फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होता। जैसे एक ताले की एक पर्टिकुलर चाबी होती है, ऐसे ही एंजाइम इज एक्टिंग एज द लॉक एंड नहीं, एंजाइम इज एक्टिंग एज द की विच चेंजेस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लॉक। लॉक क्या है? खुल गया और बंद हो गया, तो लॉक का स्ट्रक्चर चेंज होता है ना। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है, देयर एज द एंजाइम फंक्शन एज द की, बट as the key fixes with the specific lock, likewise each enzyme has specific substrate. ये कहता है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। दूसरा आ जाता है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस कहता है ठीक है, हर एंजाइम का एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है, दैट इज राइट, बिकॉज ईच एंजाइम हैज द एक्टिव साइट which fits with the specific substrate. But before binding with the enzyme and after binding with enzyme, the enzyme has different structure. Before binding with substrate and after binding with substrate, enzyme has different structure. जैसे ही substrate जो है वो enzyme के साथ फिक्स होता है या जुड़ता है, immediately enzyme का structure change हो जाता है, जिससे एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे से टाइटली बाउंड होते हैं, एंड सेकेंडली द कैटालिटिक साइट कम्स ऑपोजिट टू द सबस्ट्रेट सो दैट सबस्ट्रेट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। ये इंड्यूस्ड फिट कहता है कि एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। लॉक एंड की कहता है कि ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, वो चेंज नहीं हो सकता। सो राइट ऑन लॉक एंड की हाइपोथेसिस। It was proposed by Emil Fischer, Fischer. It was proposed by Emil Fischer. According to this hypothesis, first point, enzyme has fixed structure. Enzyme has fixed structure. Second है, the active site of the enzyme is such that it fixes with its own substrate. It fixes with its own substrate as the specific key fixes with its own lock only. Fixes with its own lock only. Ma'am, as a specific? As the specific key fixes with its own lock only. Next point है, the enzyme acts as the key which changes the configuration of the substrate to product. Which changes the configuration of substrate to the product. Next point है, the chemical reaction between enzyme and the substrate. The chemical reaction between the enzyme and the substrate does not alter the shape of the enzyme.
does not alter any shape, any change in, does not alter the chemical reaction between the enzyme and the substrate, does not change the, yet does not alters the structure of the enzyme. This model explains specificity of the enzyme and competitive inhibition of the enzyme. ठीक है जी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा induced fit hypothesis. It was proposed by, next आ जाते हैं induced fit hypothesis. It was proposed by Koshland. It was proposed by Koshland. Koshland. It is the modified form of lock and key hypothesis. Second point देखिए. It is the modified form of lock and key hypothesis. According to this model, enzyme has two sites. Buttressing site and catalytic site. It has two sites या two parts of active site आप कह सकते हैं. Buttressing site and catalytic site. The substrate binds with the buttressing site. The substrate binds with the buttressing site. Next point है binding of substrate with buttressing site. Binding the substrate with the buttressing site alters the structure of enzyme. Alters the structure of enzyme in such a way that catalytic site comes opposite to the substrate. That catalytic site comes opposite to the substrate. Which breaks the older bonds in substrate and forms the product and forms new bonds, which breaks the older bonds and forms new bond, thus converting substrate into product. Thus converting substrate into product. Next point है into product. Substrate product बन गया. Thus, according to this hypothesis, enzyme has dynamic structure. Enzyme has dynamic structure.
नेक्स्ट पॉइंट स्टार डाल के लिख लेना. Induced fit hypothesis is more accepted hypothesis. Induced fit hypothesis is more accepted hypothesis. मैम इसका ये नाम क्यों रखा गया? Induced fit मतलब जैसे ही सबस्ट्रेट फिट हुआ एक्टिव साइट से, इसने इंड्यूस कर दिया एंजाइम को चेंज होने के लिए. ठीक है, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा nomenclature and classification of enzymes. Nomenclature and classification of enzymes. It is done by, इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाइए, IUB. फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट. IUB मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट. The enzymes are classified into 6 classes. The enzymes are classified into 6 classes based on their function. Function के basis पे. Based on their function. First आ जाइए oxidoreductases. Oxidoreductases. तो फंक्शन पता चल रहा है जैसे कि which causes या which catalyzes oxidation, reduction and dehydrogenation reaction. ये भी तो redox में ही आ जाता है ना. Dehydrogenation means loss or gain of hydrogen. Oxidation, reduction and dehydrogenation reaction. Oxidation is loss of electron. Oxidation is loss of electrons. Reduction is gain of electrons. Reduction is gain of electrons. And dehydrogenation. Dehydrogenation is the removal of hydrogen. For example, again हम बात आ जाते हैं Krebs cycle. Krebs cycle में सक्सीनेट से फ्यूमरेट बनता है. एंजाइम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस. ध्यान से देखना अब यहाँ पे क्या हुआ. FADH2 से FAD बना, मतलब फ्लेविन एडेनिन डायान्यूक्लियोटाइड. ये है रिड्यूस्ड फॉर्म. इससे हाइड्रोजन निकला, ये चेंज हो गया इसमें, और ये हाइड्रोजन
सक्सीनेट से अटैच होके किसमें चेंज हो गया, फ्यूमरेट में। डू यू गेट मी? सो हियर सक्सीनेट क्या हो रहा है, सक्सीनेट इज रिड्यूस्ड। ये क्या हो रहा है, इट इज ऑक्सीडाइज्ड या डिहाइड्रोजनेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये भी लिख लो पहले कि एक सब्सटेंस रिड्यूस्ड है, दूसरा ऑक्सीडाइज्ड है। जब इसने इसको दे दिया तो एस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और एस डैश क्या हो गया, वो आई एम सॉरी, एस क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन निकल गया, और ये रिड्यूस हो गया, ये चेंज हो गया। ठीक है, पहले ये इक्वेशन लिखो, फिर मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ कि सक्सीनेट प्लस FADH2 अगर हम कहें तो क्या बना, फ्यूमरेट प्लस FAD पॉजिटिव, ये है रिड्यूस्ड, ये है ऑक्सीडाइज्ड। सक्सीनेट ने बना लिया फ्यूमरेट, ये रिड्यूस्ड हो गया, और ये ऑक्सीडाइज्ड। लिखो जरा जल्दी से, पहले ये लिख लो और फिर ये एग्जाम्पल लिख लो। अनदर, ये सिर्फ अब मैं नाम बताऊंगी। अनदर इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, नाइट्रेट रिडक्टेज। ये सब किस कैटेगरी में आ जाता है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। मैम FADH2 से जो हाइड्रोजन था वो सक्सीनेट के पास गया, राइट? तो फिर मैम वापस मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई है सक्सीनेट में, तो मैम वो रिड्यूस नहीं होना चाहिए था? सक्सीनेट जो है फिर रिड्यूस तभी तो हुआ ना, रिड्यूस होके किसमें चेंज हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट में। ओके मैम इस साइड पे वो और एग्जांपल्स हैं। हाँ, ये सेकेंड इसी की ऑक्सीडो रिडक्टेजेस की बाकी की एग्जांपल्स है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज। कर दूं रब बेटा? यस मैम। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रांसफरेजेस। Transferases, which transfer group from one molecule to another molecule, from one molecule to another molecule. For example, glucose plus adenosine triphosphate, 3 फॉस्फेट है इसके पास। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस ADP। यहाँ पे एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। आप इसको थोड़ा सा और चेंज करके लिख सकते हो, ग्लूकोज प्लस ADP फॉस्फेट। समझ रहे हो, एडिनोसिन डायाफॉस्फेट, इसके साथ एक और फॉस्फेट अटैच्ड है, एंजाइम सेम है, और ये बन गया, ये फॉस्फेट किसको ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रांसफरेजेस SG, इसको आप कह सकते हो SG, G मतलब एक एडिशनल ग्रुप, प्लस S डैश। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया S डैश G
plus. Can you relate it? Yes, ma'am. चलिए. एक और एग्जाम्पल करें बेटा. Yes, ma'am. अमीनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड प्लस पायरुवेट, ये ऑर्गेनिक एसिड है, मतलब इसमें अमीनो ग्रुप नहीं है, जबकि ये अमीनो एसिड है जिसमें अमीनो ग्रुप है. एंजाइम है ग्लूटामेट, पायरुवेट, ट्रांसफरेज. इसने अमीनो ग्रुप पायरुवेट को दे दिया, जिससे ग्लूटामिक एसिड चेंज हो गया अल्फा कीटो glutaric acid, and pyruvate changes into alanine amino acid. इसमें और इसमें मतलब पायरुवेट में ऑर्गेनिक एसिड इसलिए है क्योंकि इसके पास अमीनो ग्रुप नहीं है. इसने जो है इसको NH2 ग्रुप दिया, जिसकी वजह से ये चेंज हो गया इसमें और ये चेंज हो गया. दिस इज आप पूरा लिखना ऑर्गेनिक एसिड और ये है अमीनो. Is it okay? Clear है? Yes, ma'am. Everybody? Sargam, Seeraj. Yes, ma'am. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा हाइड्रोलेजर्स. हाइड्रोलेजर्स which break ester bond, ethers, peptide bond, glycosidic bond, CC bond, C हेलाइड मतलब C के साथ Cl आ जाए, C के साथ क्लोरीन आ जाए, C हेलाइड, और PN bonds by addition of water, by addition of water. हमने जैसे बायोमोलिक्यूल्स में किया कि जैसे लैक्टोस है, लैक्टोस कैसे बनता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज को कंबाइन करने से बाय लॉस ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल. और जब लैक्टेज से वो टूटेगा तो लैक्टेज क्या कर देता है, जो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था वो ऐड कर देता है एंड ब्रेक्स द बॉन्ड, ताकि वो दोनों ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज स्टेबल रहे. ठीक है. सो दिस इज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल
most of the digestive enzymes, most of the digestive enzymes are hydrolases. Mostly all the digestive enzymes हम कह सकते हैं. All the digestive enzymes are hydrolases. Next आ जाते हैं lyases. Next enzyme is lyases. These remove groups from the compounds without addition of water. Thus forming double bonds. For example, लाइस में एग्जांपल आ जाती है बेटा. हमारे पास है फ्रक्टोज 1,6-diphosphate. एंजाइम है एल्डोलेस और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बने. ये टूटे, फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट टूटा और 2 बने. कौन से 2 बने? ग्लिसरल्डिहाइड, T-phosphate, diahydroxy, acetone, T-phosphate. So this is aldolase is lyase. ये भी लिख लेना. It represents lyase. Example ये आ जाती. In glycolysis. It is in glycolysis. नेक्स्ट हम आ जाते हैं आइसोमरेसेस. These are the enzymes which convert a molecule into its isomer. जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फॉर्मूला सेम है. A molecule into its isomer. और यहाँ पे लिख लो isomers are the molecular different form of the compound which have same molecular formula but different structure. For example, glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate. Enzyme is isomerase. Another is glucose 6-phosphate
ये आ जाता है बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। यहाँ पे बेटा फॉस्फेट ग्लूकोज के 6th पोजीशन पे है, यहाँ पर फॉस्फेट ग्लूकोज के 1st पोजीशन पे है। एंजाइम इज एपिमरेजेस। दिस इज पोजीशनल आइसोमर या आइसोमेरिज्म। पोजीशनल, यहाँ पे थोड़ा सा एपिमरेज नहीं, यहाँ पे म्यूटेज है, म्यूटेजेस। और लास्ट आ जाता है बेटा लाइगेजेस। These are also called as synthetases. Ligases are also called as synthetases. These are the enzymes which catalyze bonding of two chemicals with the help of ATP. These are the enzymes which catalyze bonding of two chemicals with the help of ATP. For example, pyruvic acid plus carbon dioxide, वाटर भी है, एंजाइम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ATP is used, resulting in formation of oxaloacetate. So this is an example of ligases. This is ligases. तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम्स। थोड़ा सा हम और करेंगे, दैट इज सम कॉमन एंजाइम्स, some we can say some economically important enzymes, some economically important enzymes. तो इसमें लिख लीजिए proteases, proteases and lipases are used in detergents, are used in detergents to remove the stains of oils and proteins from clothes and dishes. Dishes मतलब जो बर्तन है, stains of proteins and oils from clothes and dishes. Next है क्लियरिंग ऑफ फ्रूट जूसेस। आप बेटा अपने घर में जूस निकालो, संतरे का जूस निकालो, टर्बिड सा होता है, थ्रेड थ्रेड से नजर आते हैं। बाजार से जो पैक्ड है वो संतरे का जूस भी लिखो तो वो क्लियर है। वो कैसे है ना, तो इसमें लिखो अमाइलेजेस, अमाइलेजेस आर used for clearing of amylases and pectinases, pectinases भी लिखिए।
Amylases and pectinases are used. मैम पेप्टिनेज और पेक्टिनेज? PEC, pectinase are used for clearing of fruit juices. नेक्स्ट है बेबी फूड्स, सेरेलैक वगैरह जैसे है बेबी फूड्स. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा. मैम सेकेंड पॉइंट रिपीट कर दो. सेकेंड मैंने बताया था अमाइलेजेस एंड पेक्टिनेजेस, PECTINASES. पेक्टिनेजेस are used for clearing of fruit juices. Next है enzyme trypsin is added in baby foods. Enzyme trypsin is added in baby foods to partially pre-digest it. To partially, ताकि बच्चों को बहुत ज्यादा एनर्जी ना यूज करनी पड़े फॉर डाइजेशन ऑफ फूड. To partially pre-digest it. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाइए. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस. Restriction endonucleases are used in genetic engineering. Restriction endonucleases are used in genetic engineering. Next है enzyme renin, RENNIN. Enzyme renin. उसका मैम Restriction. उसके बाद से बताना. Enzyme restriction endonucleases are used in genetic engineering. Next है enzyme renin, RENNIN. Renin is used in preparation of curd and cheese. Is used in preparation of curd and cheese. ठीक है जी. So these are some of the economically important enzymes. So this is all about enzymes. ठीक है. जरा आज जो हमने किया है उसको 5 मिनट रिव्यू करो और फिर हम आगे देखते हैं. Few questions. Why lipids are found along with other micromolecules fraction during separation of micro and macromolecules. Although lipids have low molecular weight. During separation of Micro and macromolecules fraction of the cell. Although lipids have low molecular weight. बेटा वो मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ क्यों मिला हमें? ठीक है. तो आंसर क्या है? दिस इज बिकॉज the lipids are mainly associated with biomembranes. Lipids are mainly associated with biomembranes. ठीक है. And
the fragment of the biomembranes, the fragment of the biomembranes are separated as small vesicles, are separated as small vesicles, which form the component of the macromolecule. Okay? Thus lipids are regarded as macromolecule. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए. अब आप बताएंगे द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च इज ए, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च which holds iodine is a. Option A primary structure, option B secondary structure, option B tertiary structure, and option D quaternary structure. नेक्स्ट आ जाइए. The most abundant protein. रिपीट करना मैम फर्स्ट वन. क्या बताया था मैंने, मुझे याद भी नहीं रहता. तुम बोलो बेटा, कोई स्टूडेंट बोले. The helical structure of starch which hold iodine. हाँ, the helical structure of starch which holds iodine is a. ऑप्शन ए है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी टर्शरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर. नेक्स्ट आ जाइए थर्ड क्वेश्चन. विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर, विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर. Next, name the two macromolecules. Name the two macromolecules which have catalytic power. Which have catalytic power. Next आ जाते हैं. The receptors on the cells. The receptors on the cells are mainly formed of dash. Mainly formed of dash molecule. मैम रिपीट करना. Most of the receptors present on the cells are formed of dash molecules. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है. What are gums made up of? What are gums made of? ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाइए, ये मैं आपको बताती भी रहूंगी. Name the tests, name the qualitative tests for proteins, comma fats and oils,
एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम रिपीट कर दो. in the qualitative tests, name the qualitative tests for proteins, fats and oils, and amino acids. And amino acids. नेक्स्ट आ जाता है what are artificial sweeteners? What are artificial sweeteners? Why they are prescribed to the diabetic patient? Why they are prescribed to the diabetic patients? नेक्स्ट आ जाइए what are amphoteric compounds? What are amphoteric compounds and zwitteroids? Amphoteric compounds and zwitteroids. Next है what happens when milk is converted into curd? नेक्स्ट आ जाइए glycosidic bond joins two dash, peptide bond joins dash, phosphodiester bond joins dash. नेक्स्ट है मैम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से पहले कौन सी बॉन्ड थी? पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं गिव द एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स. Therapeutic use means medicinal use of protein. Therapeutic use, THERAPEUTIC. Second है artificial sweeteners. Artificial sweeteners. Third है cosmetics. Third is cosmetics. And fourth है dietary proteins. Fourth है dietary proteins. बेटा कॉस्मेटिक्स में इफ यू रिमेम्बर हम मैक्सिमम कॉस्मेटिक्स में कहते हैं इसमें दूध है, मिल्क प्रोडक्ट्स, तो उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है. चलो पहले ये करो. The helical structure of starch which holds iodine. हाँ जी, आंसर बताइए इसका. Secondary structure. सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है. हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो प्रोटीन्स का हो चाहे वो स्टार्च का हो. बिल्कुल ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन शिवांशी. मैम इसका आंसर है रुबिस्को.
आंसर क्वेश्चन था विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर एंजाइम है Yes, ma'am. आंसर इज रुबिस्को Rubisco. अगर होल बायोस्फीयर तो रुबिस्को विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स वो कौन सा सीरत कोलेजन collagen is the most abundant protein in the animals and it is called as animal protein क्योंकि animals में ही मिलता है हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन हरगुन मैम मैंने ना इनकरेक्ट क्वेश्चन लिखा है मेरे ख्याल से मैं रिपीट कर देती हूँ नेम द टू मैक्रोमोलिक्यूल्स व्हिच आगे कैटालिटिक पावर पता नहीं which have the catalytic power name the two biomolecules which act as enzymes या which have catalytic power हाँ जी हरगुन आंसर बोलो एंजाइम्स किस किस के बने होते हैं मैम पता नहीं अतिभा आप बताइए प्रोटीन प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स के तो है ही मेनली और हाँ जी कृषा आप another is ribosomal RNA बेटा ठीक है so enzymes are formed of proteins और हम कलेक्टिवली न्यूक्लिक एसिड लिख सकते हैं न्यूक्लिक एसिड बेटा अगर स्पेसिफिक लिखें तो ज्यादा अच्छा है ठीक है ना these are formed of proteins and rRNA ribosomal RNA ठीक है जी हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन सरगम The receptors on the cells are mainly formed of dash molecules. Ma'am, protein. these are formed of proteins बिल्कुल ठीक है the receptors on the cells are formed of proteins next गुंजन What are gums made up of? Polymeric substances. these are formed of polymeric substances और थोड़ा सा और लिख लीजिए the gums are formed of polysaccharides and pectins which are formed by breakdown of cell wall of plants which are formed by breakdown of cell walls of plants और इसके साथ ही एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है हाउ फेविकोल इज डिफरेंट फ्रॉम इट हाउ फेविकोल इज डिफरेंट फ्रॉम इट तो फेविकोल क्या है इट इज ए सिंथेटिक स्टिकी सब्सटेंस जो गम्स है वो नेचुरल सब्सटेंस है फेविकोल इज ए सिंथेटिक स्टिकी सब्सटेंस called as resins सेकेंड एक और डिफरेंस लिखिए गम्स आर वाटर सोलुबल जो प्लांट्स में से नेचुरल निकलती है दोज गम्स आर water soluble whereas fevicol is water insoluble हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन कृषा Name the qualitative tests for proteins, fats, oils, and amino acids. हाँ जी तो ये बेटा क्वालिटेटिव टेस्ट ये आपको पता नहीं होगा मैं आपको बता देती हूँ राइट डाउन टेस्ट फॉर प्रोटीन्स biuret test BIURET biuret test
सेकंड आ जाते हैं फैट्स एंड ऑयल्स. Sudan 3 test. Sudan 3 test. Test रिपीट करना मैम. Sudan 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 3 test. और उसके बाद है टेस्ट फॉर अमीनो एसिड्स निनहिड्रिन टेस्ट. NINHYDRIN निनहिड्रिन टेस्ट. ठीक है जी. हाँ जी. नेक्स्ट शिवांशी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा. मैम ये मैंने लिखा नहीं. हाँ जी सीरत, आप बताइए कौन सा क्वेश्चन है बेटा. What are artificial sweeteners? Why are they prescribed to the diabetic patients? हाँ, व्हाट आर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ये भी थोड़ा सा आपको कम पता होगा. आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर नॉन शुगर कंपाउंड्स, non carbohydrate compounds which are sweet in taste. These are non carbohydrate biomolecules, yeah, not biomolecules but compounds which are sweet in taste. For example, monilin. For example, monilin. It is a sweet protein. It is a sweet protein obtained from African berry. Obtained from sweet African berry. Another is aspartame. 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 It is synthetic. It is synthetic. Because these are non-sugars. These are non-sugars. Do not add calories. Do not add calories. And thus are prescribed to the diabetic patients. हाँ जी, नेक्स्ट आ जाइए. यस हरगुन. मैम हाँ जी बेटा. मैम सेकंड का नाम क्या है? Aspartame. ASPARTAME. हाँ जी, नेक्स्ट हरगुन. Ma'am, what are amphoteric compounds and zwitterion? Amphoteric compounds are compounds having polar and non-polar बिल्कुल ठीक है. एम्फोटेरिक part. For example, the cell. अमीनो एसिड्स कह लीजिए. ठीक है. और फॉस्फोलिपिड्स कह लीजिए. एंड व्हाट आर zwitteriones? Neutral ions. These are neutral ions. ठीक है. नेक्स्ट आ जाइए. हाँ जी अतिभा, नेक्स्ट क्वेश्चन. What happens when milk is converted into curd? बताइए. मैम मिल्क कंटेन प्रोटीन नेम क्याजिन और इसकी रिएक्शन हो जाती है लैक्टिक एसिड के साथ और फिर कहेंगे. कोagulation हो जाता है बिल्कुल ठीक है. क्याजिन प्रोटीन 8th 9th उससे. हुआ. वेरी गुड, वेरी गुड. बिल्कुल ठीक है. द ड्यूरिंग you can say during curd formation the milk sugar lactose undergoes fermentation. The milk sugar lactose undergoes fermentation to form lactic acid. To form lactic acid that coagulates milk protein casein. That coagulates milk protein casein into curd.
into curd. मैम हाँ जी, ये सारा रिपीट कर दो कि वो बीच में गुंजन का फोन आ गया था, अच्छा उसकी कॉल कट हो गई है इसमें। हाँ, मैं बता देती हूँ। During fermentation of milk sugar lactose, during fermentation of milk sugar lactose, comma, lactic acid is produced that coagulates milk protein casein, thus converting milk into curd. Thus converting milk into curd. हाँ जी, नेक्स्ट सरगम। Ma'am, the glycosidic bonds, they join to sugars or monosaccharides. बिल्कुल ठीक। The peptide bonds, they join to amino acids. And phosphodiester bonds, they join to nucleotides. Very good. Glycosidic bond join to sugars, peptide bond join to amino acids, and phosphodiester bond joins to nucleotides. Very good. Next, Krisha. Give the examples of the following proteins. हाँ जी, therapeutic proteins कौन से है जो एज मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं? तो इसमें लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए, इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट्स. इंसुलिन इज ए हार्मोन बट इट इज ए प्रोटीन. अनदर इज, सेकेंड एग्जाम्पल आ जाती है स्ट्रेप्टोकाइनेस. Streptokinase for dissolving blood clots. For dissolving blood clots in blood vessels. हाँ जी, सेकेंड है कॉस्मेटिक्स. Artificial sweeteners. आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, एग्जाम्पल आपको मैंने लिखवा दिए, मोनेलिन. नेक्स्ट है कॉस्मेटिक्स. हाँ जी, बताइए कॉस्मेटिक्स में कौन सा प्रोटीन? Collagen. हाँ, मिल्क प्रोटीन. हाँ, कोलेजन भी हो सकता है, कोलेजन एंड मिल्क प्रोटीन केसीन. कोलेजन, कैरेटिन ऑल्सो. कैरेटिन जो बालों की शाइनिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं. एंड अनदर इज मिल्क प्रोटीन केसीन. कोलेजन, कैरेटिन एंड मिल्क प्रोटीन केसीन. अनदर इज डाइटरी प्रोटीन. एग्जाम्पल आ जाते हैं बेटा, ट्रिप्सिन विच इज यूज्ड इन बेबी फूड्स. ट्रिप्सिन विच इज यूज्ड इन बेबी फूड. ठीक है जी, यही कुछ था कि कुछ और भी है? यही था। ना बस यही है। यही. ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट टाइम हम पहले असाइनमेंट डिस्कस करेंगे. असाइनमेंट करके आना. अच्छा, कल आपका टेस्ट भी है बेटा, है ना? यस. टुमारो टेस्ट एट 7 in the evening. ओके, ठीक है जी. शाम को 7 बजे. कोई आपकी क्लास तो नहीं है? हम शायद केमिस्ट्री क्लास लेट हो जाए, फिजिक्स का टेस्ट भी है ना. अगर होगी तो मुझे बता देना, अदरवाइज 7 o'clock पक्का है. अगर होगी तो मुझे बता देना, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग करूँ. 7 में देना. हाँ, 7 o'clock. ठीक है, ओके बेटा, बाय. कई क्वेश्चन ऐसे उसमें से तो नहीं आएंगे असाइनमेंट से, फिर जैसे कि से नहीं, इसी से जो मैंने पढ़ाया हुआ है बस वो पढ़ लो एक बार, और एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना. ओके, ठीक है, चलिए, ओके बेटा, बाय बाय. थैंक यू. वेलकम बेटा. Thank you, ma'am. वेलकम बेटा.